Hello and welcome, my dear students of class 9th of ICSE. So this is lecture number 7 of the first chapter of physics, which we have already started, and the name of the chapter is measurements and experimentation. So previous to this, we have done 6 more lectures. I hope you people have watched the previous 6 lectures and then you are proceeding with this 7th lecture. If you have still not watched it, the link of the playlist which contains all the previous lectures is given in the description box of this video. You can click on that link and go to the playlist where you will find all the previous lectures. So in the previous lecture we discussed on this topic guidelines for writing the units. Today we will discuss some very important numericals from all the topics that we have done from lecture 1 to lecture number 6. जितने भी हमने डिस्कशन किया लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक का, उसमें से मिला जुलाकर सारे टॉपिक से आज हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. सो आई होप the question is visible in front of you, visible to all of you. Okay, let us read the question and let us start solving. Now here you don't just watch it, you just don't watch it. Okay, you also solve along with me. Okay, question को देखो और मेरे साथ solve भी करो. The mass of an atom of oxygen is 16 U. Express it in kg. So we have to express this U. U stands for atomic mass unit. जिसे unified mass भी बोलते हैं. We have to convert this U to kg. Now we have already discussed the relation between U and kg. 1 U is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. If you remember, हमने इस पर discussion किया था. Let me just take you to the previous lecture where we discussed on this. You see, children, yes, here it is. So in one of the previous lectures we discussed on U, and you see over here we discussed this formula 1 AMU, चाहे U बोलो, it is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. We have already discussed this, you know, और मैंने सब definition समझाया था previous lectures, तो जरूर देखे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है. Okay, only then you proceed with the 7th lecture. I am telling this repeatedly. चलो, तो we know this fact that 1 U is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. ये अगर मुझे याद नहीं है तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा. Okay, now we have to express 16U. Therefore 16U is equal to 16 into 1.66 into 10 to the power minus 27. Explain you the working. Okay, so up to this step things are clear. अब हमें मल्टीप्लाई 16 और 1.66 को करना है, तो सबसे पहले हम इस 166 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं. हालांकि ये 166 नहीं है, 1.66 है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के समय वी विल कंसिडर इट टू बी 166 एंड दिस इज 16. वी आर मल्टीप्लाइंग इट नॉर्मली. ओके, तो 6 6 आर 36, देन 6 6 आर 36, तो 39 हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ कैरी ऑफ 3. देन 6 1s आर 6 एंड देन 9 हो जाएगा. सो then 6 1s are 6, 6 1s are 6, 1 1 is 1. So 6 and 9 plus 6 is 15. Again there's a carry of 1, so 10 plus 6 is 16. Then 2, यहाँ पे carry 1 हो गया, so 2 2 6 5 6. So we have 2 6 5 6. But wait, there is a decimal. कहाँ पर? यहाँ पर decimal था, so decimal would come here, 2 places of decimal, so it is basically 26.56, right? So this is the product of this thing is 26.56 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, so what do we do? The concept says that we have to shift the decimal one place after the decimal should be one non-zero digit के बाद. That means this is the non-zero digit, उसके बाद decimal होना चाहिए. So what do? We will shift this decimal here and it will be 2.656 into 10 to the power. अंदर की तरफ शिफ्ट किया तो वो इंक्रीज हो जाएगा. एक बार एक स्टेप इन हमने अंदर की तरफ शिफ्ट किया तो ये minus 27 से minus 26 हो गया, मतलब एक बार इंक्रीज कर गया. दिस इज द आंसर. So here we have the answer to this. Very simple question, no doubt. Now this is the first question that we have done. So let us now proceed to the next question. It takes 5 years for light to reach the earth from a star. Express the distance of the star from the earth in light year. तो light year में हमें express करना है. Light year is the unit of distance. First of all, we have to remember this. We have already done. Now, what is the definition of 1 light year?
द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year इज कॉल्ड 1 light year। तुम्हें याद होगा, मैंने पीछे डिस्कस किया था। देखो प्रीवियस लेक्चर्स को मैं थोड़ा ओपन करके तुम्हें एक बार दिखा दूं कि वेयर वी आर, विच थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सी, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में we had discussed non-metric units of length where we discussed about light year। previous lecture को मैंने खोला है, already पढ़ा दिया हुआ है। so light year is the 1 light year is the distance traveled by light in 1 year। तो distance traveled by light in 1 year is known as 1 light year। अभी ये क्वेश्चन में कितना टाइम दिया हुआ है? 5 years। तो distance traveled by light in 5 years, 5 years लगा ना, distance traveled by light in 5 years would be 5 light years। सिमिलरली समझ में आ रहा है ना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year इज 1 light year। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 5 years इज 5 light year। तो सिंपल इसका आंसर होगा, बड़ा इजी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year is equal to 1 light year। Therefore, the distance traveled by light in 5 years is equal to 5 light years। ओके, सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ओके, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इसे मीटर को किलोमीटर में कर देंगे, वो हमारे लिए इजी होगा। तो डिस्टेंस हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ मीटर। पहले मैं मीटर में निकाल रहा हूँ, हालांकि हमें किलोमीटर्स में करना है, लेकिन पहले हम मीटर में कर लेते हैं और उस मीटर को फिर किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर, इजंट इट, बाय डिवाइडिंग बाय 1000। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, देखो, और टाइम 1 year है, और वो कितना सेकेंड्स होता है वो भी दिया हुआ है। तो गिवन डेटा में तो क्वेश्चन में तो सारी चीजें दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड, इसलिए हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है स्पीड। टाइम को भी सेकेंड में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है कि 1 year इज 3.1 × 10⁻7 seconds। तो हमारा बहुत हेल्प कर दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में। दिस इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड द टाइम वी विल नॉट टेक इन ईयर, 1 year in seconds we will take, converted into seconds, and that is 3.1 × 10⁻7 seconds। तो बेसिकली हमारा जो डिस्टेंस आएगा वहां पर वो मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम पर सेकेंड है, इधर सेकेंड है, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। अल्टीमेटली वट एवर विल गेट, दैट विल बी द डिस्टेंस इन मीटर्स, isn't it? So हमारा जो डिस्टेंस है, that distance will come in meters, and this is basically 1 light year। 1 light year का वैल्यू बाद में हम 5 light years का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। So 1 light year means speed of this is the speed, and 1 year, क्योंकि हम 1 light year का वैल्यू निकाल रहे हैं। So this is 1 year का टाइम, which is in seconds we have converted। So 1 light year का वैल्यू in meters we are calculating। इसको मल्टीप्लाई करोगे, so you will get 9.3 × 10⁻15 meters। Very simple। 9.3 × 10⁻15 meters। I don't think I need to do it, or should I explain this again? 3 point, क्योंकि इतना easy है। 3.1 × 3, हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, 3.1 × 3। So 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 9.3 आ गया। ओके, 9.3 आ गया। एंड 8 + 7 तो 15 होता है, 10⁸ एंड 10⁻7, तो ये मिलकर हो गया 10⁻15। डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, एंड इट इज ऑलरेडी लाइक दैट, 9.3 है, तो हमें कुछ शिफ्ट नहीं करना है डेसिमल को, इट्स ऑलरेडी लाइक दैट। So this is 1 light year into meters। Now इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो we will divide with 1000। So 9.3 × 10⁻15, इसको अगर हम 1000 यानी 10⁻3 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली we will have 9.3 × 10⁻12 किलोमीटर्स। हमने 10⁻3 से डिवाइड किया क्योंकि हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 मतलब 10⁻3, तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर वी हैव गॉट, इट इज 10⁻12 हो गया, दिस मेनी किलोमीटर्स। दिस इज 1 light year। अब हमें 5 light years को एक्सप्रेस करना है इन किलोमीटर्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 9.3 × 10⁻12, these many kilometers। So 9.3 × 5, 5 3s are 15, 9 5s are 45, 46।
तो 46.5 आ गया. So 46.5 into 10 to the power 12 kilometers. Now साइंटिफिक नोटेशन में करना है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, यहाँ 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है. तो 4 पॉइंट डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया एक बार 4 के बाद 4.65 हो गया इंटू 10 टू द पावर, और 1 प्लेस डेसिमल हैज शिफ्टेड ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इंक्रीज हो जाएगा, 10 टू द पावर 13 हो जाएगा, 12 से 13 हो जाएगा. These many kilometers. Simple. I don't think this is at all hard. Very easy. Very simple. Moving to the next question. The size of a particle is 4.6 micron. Mu matlab micron. Express it in meters. Now this also we have done the relation between micron and meter. So 1 micron is 10 to the power minus 6 meters. This is something which we have to learn. कि माइक्रोन इज हाउ मेनी मीटर्स. तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. देयरफॉर 4.6 माइक्रोन इज 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर्स. मल्टीप्लाई कर दिया. 1 माइक्रोन इज दिस मेनी मीटर्स, 4.6 माइक्रोन इज 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर्स. कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द wavelength of light of a particular color is 5800 angstrom. Express it in nanometer. Now to solve this, we have to know that 1 nanometer is equal to 10 angstrom. इसका उल्टा लिखेंगे तो 1 angstrom is 10 to the power minus 1 nanometer. And where we have learned this, let us go back to that topic distance का, जहां हमने एंगस्ट्रॉम डिस्कस किया था. देखो, if it is here or in the next page, हाँ यहाँ पर है. तो if you see, I will zoom it and I'll clear the screen. We have discussed 1 angstrom is 10 to the power minus 1 nanometer, क्योंकि हम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, क्लियर. और कैसे आया ये भी मैंने डिस्कस किया था कि हाउ, अगर याद नहीं रहेगा कि 10 टू द पावर माइनस 1 नैनोमीटर है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. अगर प्रीवियस लेक्चर्स को सिंसियरली देखोगे तो तुम्हारे लिए ये बहुत बाएं हाथ का खेल हो जाएगा टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर. मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था. द एक्सप्लेनेशन इज हियर, स्टिल इट इज नॉट इरेज्ड. ओके, तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स. उसके बाद फिर कैसे कैसे हमने इसको नैनोमीटर में एक्सप्रेस किया, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है जब मैं इस स्लाइड को पढ़ाया था. सो आई विल नॉट रिपीट इट बिकॉज इट विल ओनली कंज्यूम टाइम अननेसेसरीली. तो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 1 नैनोमीटर. सिंपल. अब हमें निकालना है 5800 एंगस्ट्रॉम इज कितना नैनोमीटर. So 5800 into 10 to the power minus 1 nanometer. Okay, now we have to basically convert this in scientific notation. So here we have to shift the decimal by how many places? By 3 places. Or what you can do, 10 to the power minus 1 is basically divided by 10. Na? Matlab, it is 1 by 10. 10 to the power minus 1 is nothing but 1 upon 10. तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5800 को नीचे 10 से डिवाइड कर दिया, कट गया, तो 580 नैनोमीटर. 580 नैनोमीटर आ गया. दिस इज सिंपल, कुछ है नहीं, बहुत इजी. वी हैव टू एक्सप्रेस, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट, वी हैव टू एक्सप्रेस दिस 5800 एंगस्ट्रॉम इनटू मीटर्स. नाउ वी हैव टू नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर minus 10 meters. 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meters. अभी जो स्लाइड में ओपन किया था ना, उसमें भी था वो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. 1 angstrom is 10 to the power minus 10 meters. तो 5800 angstrom will be 5800 into 10 to the power minus 10 meters. Now here what do we do? The decimal is basically here, na? If the decimal is not present in the number, it is always considered to be at the end, last digit. तो डेसिमल को हमें एक नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना है. मतलब डेसिमल को मुझे 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, डेसिमल यहाँ लाना है ना, 5 के बाद 3 प्लेसेस जंप कराया.
सो इट बिकम्स 5.800 और कितना प्लेसेस जंप कराया डेसिमल को 3 प्लेसेस, तो ये 3 बार इंक्रीज कर जाएगा। -10 +3 करेंगे तो इट गिव्स यू -7, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 meters। दिस इज द आंसर 5 पॉइंट। यू कैन ओमिट दीज टू जीरोस, तुम सिंपली लिख सकते हो 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। ओके 5.8 लिख, अगर ये 00 लिखना है तो लिख सकते हो 5.800 लिख सकते हो या 5.8 लिख सकते हो इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स। वेरी सिंपल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी हैव सॉल्व दिस। The size of a bacteria is 1 micron. Find the number of bacteria in 1 meter length. देखो 1 मीटर पूरा लेंथ है और उसमें कितना बैक्टीरिया होगा, और एक बैक्टीरिया का साइज है 1 माइक्रोन। तो सबसे पहले 1 मीटर मतलब कितना माइक्रोन वो निकाल लेते हैं। 1 मीटर मतलब कितना माइक्रोन बताओ, यू नो दिस। 1 meter means how many micron? So you see in the previous question only we discussed that 1 micron is 10 to the power -6 meters. It means 1 meter is 10 to the power 6 micron. इसका उल्टा, अगर 1 micron 10 to the power -6 meters है तो 1 meter is 10 to the power 6 micron. तो 1 meter is 10 to the power 6 micron और हमें वही निकालना है कि इतने माइक्रोन लेंथ में 10 टू द पावर -6 माइक्रोन के लेंथ में कितना बैक्टीरिया है अगर एक बैक्टीरिया का साइज 1 माइक्रोन है। तो इट्स वेरी सिंपल, वी विल डिवाइड बोथ ऑफ दीज नंबर्स। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया in 1 meter, which is nothing but equal to 10 to the power 6 micron length. तो 10 to the power 6 micron divided by 1 micron, तो माइक्रोन माइक्रोन कट गया and it is only 10 to the power 6 इतने बैक्टीरिया, these many number of bacteria. Simple, एकदम easy. Wavelength of light is, next question, wavelength of light is 589 नैनोमीटर। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम? देखो अभी अभी हमने किया, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के बीच का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम? वी डिड जस्ट नाउ, पीछे देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, याद करना पड़ेगा। 10 एंगस्ट्रॉम है ना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास कितना नैनोमीटर है? 589 नैनोमीटर इज इक्वल टू 589 और इनटू कर देंगे इसको 10 से, 10 एंगस्ट्रॉम। दैट मींस इट इज नथिंग बट 5890 एंगस्ट्रॉम। कुछ नहीं है, एकदम इजी, हलवा पूरी, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार from the earth is 8.33 light minutes. What do you understand by this statement? Express the distance in meters. देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि 1 लाइट मिनट का क्या मतलब होता है। अगर हम बोल रहे हैं 1 लाइट मिनट, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है 1 लाइट मिनट। पॉइंट ए मान लो कोई स्टार है, पॉइंट बी मान लो कोई दूसरा प्लैनेट है या स्टार है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 लाइट मिनट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉइंट ए से लाइट को पॉइंट बी तक आने में 1 मिनट लगता है। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाइट को आने में 1 मिनट लगेगा, तब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट मिनट। यहां पर कह रहा है कि एक स्टार और हमारा अर्थ है, उनके बीच का डिस्टेंस है 8.33 लाइट मिनट्स। यहां पर मान लेते हैं कि वो स्टार है एंड हियर इज आवर अर्थ, इनके बीच का डिस्टेंस है 8.33 लाइट मिनट्स। दिस इज सेड इन द क्वेश्चन। तो व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब यह है कि इस स्टार से अर्थ तक लाइट को आने में 8.33 मिनट्स लगता है। इस स्टार से अर्थ तक लाइट को आने में 8.33 मिनट्स लगता है। तभी हम बोल रहे हैं कि इस स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 8.33 लाइट मिनट्स है। सिंपल। सो लेट अस राइट द आंसर। दे हैव आस्क्ड अस द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। लिखेंगे द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज दैट लाइट टेक्स 8.33 light minutes, sorry 8.33 minutes, इतना समय लेता है 8.33 minutes to reach from the star, जो स्टार की बात की जा रही है, जिस स्टार की बात क्वेश्चन में किया जा रहा है, उस स्टार से अर्थ तक, टू अर्थ, टू द अर्थ।
This is the meaning of the sentence. Express the distance in meters. Now let us go back to light minute ka topic when we studied. It is very simple. See, under the topic light year, we discussed that 1 light minute is equal to 1.8 into 10 to the power 10 meters. अच्छा, basically ये हमने किया कैसे, ये रिलेशन हमने निकाला कैसे? वेरी सिंपल. 1 लाइट मिनट, ये तो डिस्टेंस है ना, लाइट मिनट इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. तो हमने स्पीड पुट किया, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 60 सेकेंड्स पुट किया, बिकॉज 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स. तो ये सेकेंड्स और ये पर सेकेंड तो कट गया, वी आर लेफ्ट विथ ओनली मीटर्स, and 60 into 3 into 10 to the power 8 is 1.8 into 10 to the power 10 meters. So finally we got that 1 light minute is 1.8 into 10 to the power 10 meters. We will use this relation in this question. So we know that 1 light minute is 1.8 into 10 to the power 10 meters. And हमें 8.33 लाइट मिनट्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है. कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.33 से. सो 8.33 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई. आई होप यू कैन मल्टीप्लाई, दिस इज वेरी सिंपल, फिर भी मैं कर देता हूँ. तो 8.33 इंटू 1.8 करोगे, लेट अस डू हाउ मच इट इज. 8.33 इंटू 1.8. So let us keep it like this. 8.33 into 1.8. So 8 3s are 27, 9 8 3s are 27, then it is 28 29, 8 8s are 64, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 8 1s are 8, 7 5 6 7 8, and then 8 plus 6 14. So it is basically 14827, and the decimal is here and here, so 4 places of decimal. So it is basically 1 2 3 4 1.4827 into 10 to the power 10 meters. This is the answer. This is the answer. All right. So 1.4827 into 10 to the power 10 meters. So we have converted these many light minutes into meters. Very simple. So with this we conclude today's lectures. Thank you, and we will meet very soon with lecture number 8. We will start with the topic measurement of length, where we will discuss about vernier calipers and screw gauge. God bless you. Take care.